तमाम साथियों को या अली मदद and thank you for joining us this morning. Inshallah, we will continue with our Farman on Betul Khial promotion Farman, which was given to the Montreal, Canada Jamaat in November 2017. Let's start with Imam's blessed name. Nur Maulana Shah Karimul Hussaini Hazir Imam या मुलाए मेहरबान मदद फरमा या मुलाए मेहरबान या मुलाए मेहरबान या मुलाए मेहरबान मदद फरमा नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाजिर इमाम या मौला तौफीक ताईद हिम्मत व यारी मौला तौफीक ताईद हिम्मत व यारी मौला या मौला हम गरीबों की मदद फरमा मौला या मौला मेहरबान हमारे करीब आ जा मौला हमारे करीब आ जा मौला और करीब आ जा मौला और अपने नूर से हमारी दोरवानी फरमा मौला अपने नूर की रोशनी में हमारी हिदायत फरमा मौला या मौला मेहरबान अपना मुबारक हाथ हम गरीबों पर रख मौला ताकि हम तेरे साये के नीचे तेरी शफकत के नीचे तेरी ब्लेसिंग के अंदर रहकर कोई खातर खा इल्म का काम कर सके मौला या मौला मेहरबान मदद मौला मदद तमाम साथियों को एक बार फिर या अली मदद and thank you for joining us. I had promised that we will read this line again because we had many questions at the time of promotion how Imam separates and if you remember our very end of last week discussion that at the time of promotion or in their whole there are three kinds of murid sitting together. One who have forgotten their bowl because this is not their first time they're receiving a bowl, so they do not go with those who are receiving the bowl for the very first time. Second are those murids who says the bowl that I have received earlier is not working for me and I would like additional or another bowl. And then there are third kind of murid who says we have completed our bowl and therefore we like to receive an additional bowl in order for us to move forward even further. In the last category, there can be those who have one bowl, two bowl, three bowl, or even four.
So with that understanding, we will read this one paragraph again, which we did read last week. But keep this understanding in mind. It will help because there were few questions at the end of the session regarding how there can be more than one kind of murid sitting together and what happens to them. And actually Mullah talks about that what happens to them, all those different kind of murid. तो यहाँ पर थोड़ा उर्दू में मैं बताता चलूं कि इस पैराग्राफ को हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था और नाचीज ने वादा किया था कि हम उसको दोबारा से पढ़ेंगे क्योंकि आखिर के अंदर कुछ सवालात आए थे जिसमें दोस्तों ने पूछा कि हम इस बात को किस तरह से समझें कि एक ही हॉल के अंदर अलग अलग किस्म के लोग मुरीद मौजूद होते हैं। यहाँ पर 3 किस्म के जमात मौजूद होती है। एक ये कहते हुए आते हैं कि वो बोल जो हमने पहले लिया था उसको हम भूल गए हैं, इसलिए हमें दूसरा बोल इनायत कर दीजिए। सेकंड, वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पास बोल तो है लेकिन किसी वजह से ये बोल हमारे लिए काम नहीं कर रहा, तो हमें एक और बोल इनायत कर दीजिए। तीसरी किस्म की जमात वहां पर जो मौजूद होती है वो ये कहते हुए आती है कि हमने अपने बोल को मुकम्मल कर लिया है और हमें और आगे बढ़ना है, तो आप हमें एक और इजाफी, इस बात को याद रखना, इजाफी बोल इनायत कर दीजिए। ये जो तीसरी कैटेगरी के मुरीद होते हैं उसमें ऐसे भी हो गए जिनके पास पहले एक बोल था या शायद 2 बोल थे या शायद 3 बोल थे, हो सकता है कि उनके पास अब 4 बोल हो जाए, ऐसे लोग भी मौजूद हो गए। अब अगर हम ये बात समझ गए कि ये लोग यहाँ पर क्यों होते हैं, इसलिए कि ये इन तमाम लोगों ने पहले कभी बोल हासिल किया था, तो वो उस जगह नहीं होते हैं जहां पर पहली मर्तबा कोई बोल लेने के लिए आया है। वो अलग होते हैं जो पहली मर्तबा बोल लेने आए हैं। यहाँ पर वो लोग होते हैं जिन्होंने एक मर्तबा पहले बोल लिया था। So now with that understanding, it'll be easy for us to understand this paragraph and all of those questions would be answered with that understanding and what Imam is saying here. And if you notice, Imam is talking about precisely that. Now you are all here for promotion, and you, the Imam, looked at the missionary and pointed to him. He will give you the next bowl. Next bowl. Now remember, Imam is talking to 3 different type of people sitting there. 3 different types of people sitting there. He's talking to all of them together. He will give you the next bowl. I am pointing to him so you will recognize him. All right? Don't let him out of the room. Keep him here till he has given you, all of you. Remember 3 kind of people. The word that is assigned to you because you are at different levels. You see that? You are at the different level. Now we know
Imam is talking about those three kind of people. The Imam places his hand in front of him and his face down and up, three different levels, like this. But above all, keep in mind that if you sit and you search, so now Imam is talking to all three levels of people there and combinedly giving them instructions regardless of which group you are with. Above all, keep in mind that if you sit and you search, there is no failure. If you think about this line, and in this very Farman, Mola has talked about the failure or not to think of a failure so many times that one must think and pay attention. Who do you think Imam is speaking to? Foremost, he is speaking to the second group and maybe even to the first group. And I will explain how and why. Remember, there were three groups. When Imam is talking about to keep in mind, there is no failure. Who is he talking to out of those three groups? At the top, at the foremost, he is speaking to the second group. Because second group was the one who had come by saying, the Isme Azam I had received before did not work for me. In other words, I have failed. And the first group who had forgotten the Isme Azam, maybe because maybe they forgotten the Isme Azam because after a while practicing, maybe they did not feel that this Isme Azam is working for me. So maybe they stopped the practice and eventually they forgot their Isme Azam. But regardless, it doesn't matter if you were in part of first group or the second group. Imam is talking to all at the same time because Imam does not want to point out to the first group or the second group. Imam wanted to make them feel comfortable. Imam want them to understand. And what does Imam want them to understand? There is no failure. Because just sitting in the ibadat itself is success. Just sitting in ibadat is success. The minute, the minute that you sit in the ibadat, you have fulfilled Imam's wish, you have fulfilled your promise that you will wake up and sit. Your niyat of sitting in ibadat is accepted. Your kurbani of waking up is been accepted. Look at all of the success points. All of the success points are there. If that is the case, there is no failure. अब हम समझ गए कि मौला यहाँ पर जो फरमा रहे हैं कि जब आप इबादत में बैठे तो एक चीज को अपने जहन से निकाल दें कि इबादत में कहीं
खुदा ना खास्ता हम नाकाम ना हो जाएं, क्योंकि नाकामी की तो कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। जैसे ही आप इबादत के लिए उठ गए, आप कामयाब हो गए। किस तरह से? पहला, आपने इमाम के फरमान को मान लिया। दूसरा, जो आपने वादा किया था कि हम इबादत के लिए उठेंगे, आप उठ गए। तीसरा, आपकी नींद की कुर्बानी जो दी वो कबूल हो गई। और चौथा, आप अगर वहां आके बैठे हैं, चाहे फिर वो 5 मिनट हो कि 15 मिनट हो कि आधा घंटा हो कि घंटा हो, आपने जो नियत की थी वो कबूल हो गई। आपने देखा कि कामयाबी ही कामयाबी है इबादत में, नाकामी का तो कोई अंदेशा ही नहीं है। देयर इज नो वे कि कोई आदमी ये कहे कि मैं इबादत में बैठा और नाकाम हो गया, क्योंकि वो बैठने के अंदर ही कामयाबी है, फरमान बरदारी है, इमाम को खुश करना है, आपके वादे को निभाना है, आपकी कुर्बानी कबूल हो गई, आपकी नियत कबूल हो गई, तो फिर नाकामी का तो कोई दरवाजा खुला नहीं है वहां पर, नाकामी की कोई जगह नहीं है वहां पर, कामयाबी ही कामयाबी है इंशाल्लाह। But above all, keep in mind that if you sit and you search, there is no failure. I'm very insistent that you not fear failure. There is no such thing as failure in this. In this matter, there is no failure. All right? I give each one of you special blessing for success in your search. I personally feel that when Imam says to those murid who are sitting in front of him for the Betul Khyal bowl, Imam's mercy, Imam's rahmat, Imam's love for them is much greater, because you have come, you have made Imam happy. And when he is happy, what does he do? He shower you with his blessings. So now with all of the blessing that you have received from the Imam Zaman, that itself is a success. That in itself is a success. Now if you sit in your ibadat, that success, the blessing for the success in your search. खाना वदान, खाना वदान, खाना वदान। चूंकि आप वहां पर आए, आपने इमाम को खुश कर दिया, तो फिर इमाम की बरकत, इमाम की दुआ आशीष ही आपके लिए वो कामयाबी है कि आप यहाँ पर आकर इमाम को इतना खुश किया कि इमाम की रहमत और इमाम की मीठी नजर आपके ऊपर है। अब नाकामी का कोई चांस नहीं है। There is no way that one will be failed just because of the blessing surrounding those murid who were present there. So don't fear failure. If I feel my murids are fearing failure, I know that you are closing the door. I don't want you to close the door. All right? मौला क्या फरमाते हैं कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी भी डर लग रहा है, तो फिर मुझे डर लग रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने आप का तरक्की करने से दरवाजे को रोक लेंगे, दरवाजे को बंद कर देंगे, एंड वो उसके अंदर आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। सो डोंट फियर एंड डोंट क्लोज दैट डोर, डोंट क्लोज दैट डोर ऑन योरसेल्फ, because Imam is opening the door for you to be successful with his blessing, with the Isme Azam, and with the Noor
which he is giving you with that Isme Azam, inshallah. Can you assure me you will not think of failure? Imam asking question. Can you assure me that you will not think of the failure? Jamaat said yes, yes. All right, good. Just get rid of whole notion of, just get rid of all notion of failure in this manner, in this matter. All right. मुला पूछते हैं कि क्या आप मुझे खातरी दे सकते हैं कि आप नाकामी के बारे में नहीं सोचेंगे जब इबादत में बैठेंगे? जमात कहती है जी खुदावंद। मौला बोलते हैं ठीक है, फिर आप इस मामले के अंदर नाकामी का जो वर्ड है ना, उसको निकाल दें, उसको भूल जाए. If you are assuring me, then just get rid of that word failure completely in this matter, because there is no such thing as failure in this matter. And I give you special blessings for success. And I assure you, if you find that light, if it touches you, you will know. You will know. Keep it to yourself. It is individual. Here, let's try to explore this part a little bit more, as we have explored this part before. Sometime our friends on this line and outside this line do reach out to this Garib and Nachis and ask this question: how would I know if a nur or the light would or have touched me? How would I know? And my answer is always repeating Imam's word. That is, if this light touches you, if this happiness touches your heart, you will know it. There will be no doubt in your mind that you have been touched by the light. But I also understand why you asking that question. Here today, we will understand the answer to that question. Why would you ask that question when Nachis have said this and Imam have repeatedly said that when and if this light touches you, you will know it. There will be no doubt in your mind. You know why you still don't understand and don't have that understanding of that nur, and you have to ask again and again? Because you are looking for something of a physical. You are looking for a light bulb, that one day a light bulb will go on. And because you are looking for that one particular physical thing, because the light bulb has not gone on, you are feeling that I have not been touched by the light. So let's try to understand the light. What is this light that Imam is talking about? क्या वजह है कि अभी भी हमें ऐसा लगता है या पूछना पड़ता है कि मुझे कैसा पता चले कि इस नूर ने, इस रोशनी ने मुझे छुआ है? जबकि इमाम फरमाते हैं कि जब ये नूर, ये रोशनी आपको छुएंगी तो इसमें कोई भी
शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होगी। आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि क्या हुआ। फिर क्या वजह है कि लोग पूछते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नूर ने, ये रोशनी ने मुझे छुआ है। उसकी एक वजह है, ये सवाल पूछने की एक वजह है, वो ये है कि हम शायद मादी रोशनी यानी कि लाइट की रोशनी को ढूंढ रहे हैं। हम समझते हैं कि एक दिन हमारे दिल और दिमाग में कोई लाइट बल्ब ऑन हो जाएगा, और लाइट बल्ब ऑन हो जाएगा तो मुझे पता चलेगा कि नूर ने मुझे छू लिया है। जबकि हमें उस लाइट को समझने की जरूरत है। चूंकि हमने उसको मादी रोशनी से ढूंढा है, शायद इसीलिए हमें ये सवाल आता है कि मुझे क्यों ये लाइट बल्ब नजर नहीं आ रहा है, मुझे ये रोशनी नजर नहीं आ रही है। और हमारे दिल में डाउट पैदा होते हैं कि क्या अभी तक मुझे ये नूर ने छुआ है कि नहीं छुआ है। बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर अ फिजिकल मादी लाइट, रोशनी। When the Noor touches you in different ways, Noor can touch you in the form of enlightenment. Noor can touch you in the form of happiness. Noor can touch you in the feeling of love. Noor can touch you in the feeling of blessings. Noor can touch you in so many different ways, because Noor is not just a light. Noor can be a spark, and Noor can definitely be a light, but Noor comes in the different shapes and forms. If we are looking for this one single kind, meaning a light bulb, then there would be our misunderstanding of the Noor. Because Noor is not only and just a light. Noor comes in a different shapes and form. Noor can be just a happiness, and Noor can be in such a way that you feel blessed. Just a love and blessing in your heart. You get up from the ibadat and you are just like, I'm flying. I'm I'm in the cloud. That feeling. Something have touched me. I did not see anything, but I felt it. That light. Because light comes in different shapes and form. And remember, we have a five senses. Why would it nur only be for the eyes only? What about the ears? What about the nose? What about our taste? What about our touch? You see, we have five senses, and nur comes in each one of those senses. So there is a nur for the eyes. There is a nur for your ears. There is a nur for your tongue. There is a nur for your touch. So now अगर हम ये बात समझ गए हैं कि ये रोशनी पांच तरीके से, यानी कि अलग अलग हमारे जो सेंसेस है, आंखों से देखना, हाँ रोशनी भी हो सकती है और चिंगारी भी हो सकती है, आवाज की सूरत में भी हो सकता है, समझ की सूरत में भी हो सकता है, खुशी की सूरत में भी हो सकता है, सूंघने की सूरत में भी हो सकता है, चखने की सूरत में भी हो सकता है, और छूने की सूरत में भी हो सकता है। Now
With that, question is answered. With that understanding that Noor can be in different shapes and form, that question is answered, and hopefully we have a better understanding of the light and the happiness when it will touch us. Now, second part was keep it to yourself as it is individual. It is not for the whole group, or it is individual with his forefinger. The Imam made a movement going back and forward between him and individual in various parts of the room. Imam says, remember, it is individual between me and you, between me and you, between me and you. Very individual. What does that mean? That it is not only personal, but so individual, is like one on one between you and the Imam. Because each experience is unique. Each experience is unique to you and is between you and your Imam. That is the reason that if you share your experience with someone, they will not be able to understand because they may have some different experience. They may have touched the light in some other shape and form. How would you be able to explain that? Because they will say, I had this happen, and you will say, I had this happen. Who's right, who's wrong? So keep it to yourself because it is between you and the Imam Zaman, and it is very, very individual. So just keep it to yourself. You will find it at different times of your life because not only that, amazing part is you may have one experience today, you may have a different experience tomorrow. You may have multiple experiences throughout your life. Individually, you will collect all of that happiness. You will take all of those blessings individually, and you will have at the end handful, basketful of blessing and experiences. You can see as you move forward with one experience to the second, to the third, to the fourth, to the fifth, and inshallah to the sixth and seventh, you will have enough experience where you will understand more and more and more. And then when Imam comes back, you can go back to the Imam and say, Mullah, I want another bowl. I want an additional bowl. I want more of your blessing. I have already been blessed, but I would like more of your blessing because your blessing have helped me move forward. Now I understand it was your blessing. I would like a little bit more of that. How amazing would that be? How happy would we make Imam if we would go with that notion, with that understanding by saying, please, I have been blessed, but I need a little bit more blessing so I can move even further. I wanted to go as much and as high as possible. Wouldn't that be great? अगर हम मौला के पास जाएं कि मुझे एक मर्तबा नहीं, मुझे दो मर्तबा नहीं, मुझे चार मर्तबा, छह मर्तबा, सात मर्तबा इस नूर ने छुआ है और मैं चाहता हूं
कि मेरे को आप और दुआएं दे दे मौला, ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं. You will find it at different times of your life in different circumstances, but keep it to yourself. This is individual to each one of you, each one of you. All right. आपको इंशाल्लाह बहुत ज्यादा अलग अलग ब्लेसिंग्स और एक्सपीरियंसेस हो गए. आप उसको अपने तक रखना और किसी से शेयर नहीं करना. And you are in my heart, you are in my thoughts, you are in my prayers, and I wish you great success. Great success. खाना वदान, खाना वदान, खाना वदान. बोला और दो आशीष के साथ. और जब हम इमाम के ख्यालात के अंदर है, हमेशा इमाम के दिल में है हमेशा. और इमाम फरमाते हैं कि जब आप इबादत में बैठेंगे तो मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं, मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है. अब नाकामी की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर. There is no way that we can fail, because not only we are in Imam's heart and thoughts, Imam says, I'm standing right next to you, holding your hand. Only there is one path, and that is the path to success. Because he is your guide, he is your wali, the friend, he is holding your hand. Then there is no chance of failure, but only one path, and that path goes toward the success. Inshallah. Mullah says, Kanavadan, Kanavadan, Kanavadan. Now you are all at different level, so there is a process. So this murid, meaning the missionary, will give you the bowl that I have given for you. Now imagine this part. There was a question, right? Who will get what bowl? Imam knows who you are. He can see you. He can read your heart. He can read your mind. Imam will leave multiple bowls. For those who have forgotten, give them this bowl. Those who were not successful in their mind, give them this bowl. And those murid who have come over here for the first, second, third, fourth time, give them this bowl. And if there are those who have said we already have received more than 2 or 3 bowl, give them this bowl. You see, Imam has made it easier for all to receive the bowl regardless of what level or what stage you are. And Imam saying right here that there is a process, and I have given for you to practice an individual bowl. And I wish you great success. Continue the search, sit in humility, set aside worldly matter. चूंकि मुझे पता है कि आपको किस चीज की जरूरत है, मैंने अलग अलग बोल इनको दे दिए हैं मिशनरीज को, और वो आपको एक प्रोसेस के साथ गुजार कर ये बोल इनायत कर देंगे. और मौला फरमाते हैं कि बस आप कंटिन्यू करना और इसको आगे से आगे बढ़ाना. This is the end of this Farman, and inshallah next week we will read this new Farman you have in front of your screen from Karachi, Pakistan, December 15th of the same year 2017, inshallah. So let me stop here. Then if you have more question or any comments, anything you like me to repeat,
in Urdu or English, please let me know and we can go back and repeat that. Ji. जी सर, Subhanallah, sir, Subhanallah. Friends, please share your questions in the chat, or you can use the raise my hand feature to ask any questions, or you can unmute your device. So there are no questions in the chat at this time. Hey, friends, please go ahead. If you have any question, you can unmute your device. It can be just a comment, whatever you understood out of this Farman. If you would like to make a comment, that will help all the other friends to understand how we are understanding this Farman. Ji. मदद सर Ya Ali Madad. सर मैं हम्बल ट्राई कर रही सर जैसे आप समझाए ना जो मेरे को बहुत ज्यादा समझ में आया आज की दीदार जो होते हैं वो हमको फिजिकली बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए और दीदार हमको 5 सेंस ऑर्गन जैसा मौला पापा दिए हैं तो हर सेंस ऑर्गन से हमको मौला दीदार दे सकते हैं अलग अलग रूप में तो सर लेकिन मेरे दिल में यही हो रहा कि सर अगर मुझे सही समझ नहीं है ये सब चीज की तो हो सकता है कि दीदार हो भी जावे और मुझे पता भी ना चले तो ये तो बहुत बहुत समझना चाहिए ना सर तो मुझे इस पे समझना है और थोड़ा Ji. हिंदी Ji. Ji. So, my sister, I'm going to just translate what she said. A beautiful comment, and along with the comment, her humility. आपकी आजीजी से कुर्बान, आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि आप इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं कि सबसे पहले जरूरी है कि हम फरमान को समझ लें जो मौला दे रहे हैं, ताकि फिर हम उस बात को समझते हुए इबादत के अंदर बैठे। तो पहला नुक्ता जो आपने फरमा दिया वो ये था कि जब हमको यही पता नहीं है कि किस किस तरह से हमें दीदार हो सकता है तो हमें कैसा पता चलेगा कि दीदार हुआ है। तो नाचीज कुछ सैंपल के लिए, सिर्फ समझाने के लिए, मिसाल के तौर पर कुछ चीजें अर्ज कर देता है ताकि हमें उससे मदद मिले। एंड आई विल कम बैक इन इंग्लिश, नो वरीज, एंड आई विल रिपीट ऑल ऑफ दैट। जिस तरह से कभी कभार हमें मच्छर की बिनबिनाट सुनाई देती है इबादत के दौरान में, हम समझते हैं कि कोई जाहिरी मच्छर है, नहीं, वो हमारे बातीन के कान खुल रहे होते हैं और वो भी इमाम नूर फहाल, लिख लें, वो भी इमाम नूर फहाल की एक तजल्ली होती है आवाज की सूरत में, यानी कि इमाम आपके कानों को खोल रहा होता है। जब ऐसा हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि नूर आ गया है और वो अपना काम कर रहा है। क्या कर रहा है? हमारे कानों को खोल रहा है, ये वाले कानों को नहीं, हमारे बातीन के कानों को खोल रहा है। कभी कभार हमें कुछ बारीक बारीक, यानी कि एक छोटी बच्ची की आवाज के तौर पर आवाज आती है और हम समझते हैं कि शायद बाहर कोई बात कर रहा है, जबकि वो हमारे अंदर हमारी रूह जिंदा हो गई होती है और बोलने लगती है। लेकिन एक बच्चे की आवाज में, कि कहीं आप डर ना जाएं, क्योंकि जोर से बोलेंगे तो आप डर जाएंगे। एक छोटी बच्ची की तरह आवाज अंदर से आती है, आपको तवज्जो देनी है। फिर
ये तो कान का माजिजा हो गया। उसको समई माजिजा या समई नूर कहते हैं। ऐसा नूर जो कान के जरिए से आता है। फिर कभी कभार इबादत में हमें खुशबू आती है, साबुन की खुशबू, परफ्यूम की खुशबू। हम समझते हैं शायद इधर कोई परफ्यूम लगा के आया है, लेकिन आप सोचेंगे जमात खाने के अंदर साबुन की खुशबू आ रही है। या आप घर में बैठे हुए हैं तो कोई कपड़े तो नहीं धो रहा है इस वक्त, क्योंकि आपका नाक जो है उसके लिए एक खुशबू, एक नूर खुशबू की सूरत में आई है, ताकि आपका अंदर का बातिन खुल जाए। फिर कभी कभार हमारे जबान के ऊपर कोई टेस्ट आता है। चूंकि मौला पापा को बिरयानी अच्छी लगती है तो हम बिरयानी की मिसाल ले लेते हैं। आप इबादत में बैठे हैं, अचानक आपके मुंह के अंदर टेस्ट आता है और उस टेस्ट के साथ खुशबू भी आती है बिरयानी की। आप सोचें कि वो नूर किस तरह से काम कर रहा है। वो नूर हमारी जबान पर बैठ गया है, वो नूर हमारे नाक के अंदर आ गया है। आपने देखा कि नूर की कितनी तजलियात है, अलहदा अलहदा तरीके से। नूर फहाल, इमाम का नूर अलहदा अलहदा तरीके से काम करता है। हम इंतजार कर रहे होते हैं आंखों से, आंखों से जो है कहीं वो स्पार्क नजर आता है, बस स्पार्क होता है, एक छोटी सा स्पार्क होता है। कहीं पर वो अचानक से ऐसा लगता है कि कमरे के अंदर बत्ती खुल गई है। हम आंखें खोलते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, फिर आंखें बंद करते हैं तो रोशनी नजर आती है। आंखें खोलते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो बाहर नहीं है, वो अंदर है। यहाँ आंखों के सामने कोई तजल्ली आती है, कोई दीदार आता है। आंखें खोलते हैं तो नहीं है। उससे ज्यादा बढ़कर कभी कभार हमें महसूस होता है कि हमारे हाथों पर, हमारे कंधों पर, हमारे सर पर किसी ने हाथ रख दिया है। हमारे करीब कोई आ गया है और उसका हाथ हम पर है। आप आंखें खोलते हैं तो कोई भी नहीं होता है। ये अलहदा अलहदा महसूसात है। यानी कि इमाम आपको खातरी देता है, आपको गारंटी दे रहा है कि देखो मैं आपके कितने करीब हूं, क्योंकि इसके नूर की एक तजल्ली नहीं है, बहुत सारी तजल्लियात है, बहुत सारे शेप्स एंड फॉर्म्स है, जिससे वो आपको एक टच करता है। आपके नाक, जबान, आपके चेहरे पर हाथ होना, आपके सर पर हाथ होना, आपके कान से सुनाई देना, आपकी आंखों से अलहदा अलहदा चीजें दिखाई देना, ये तमाम की तमाम उसके नूर की निशानियां हैं। जैसा जैसा आप उस पर तवज्जो देंगे, वैसे वैसे आपको अंदाजा होगा कि हो सकता है कि माजी में ये चीजें हमारे साथ हुई हो और हमने उसको इग्नोर कर दिया हो, नजरअंदाज कर दिया हो, यानी कि वो नूर छू के चले गया, हमें पता ही नहीं चला। So let me repeat here in English. This was beautiful comment my sister made. Not only that, look at her humility, that I don't know anything, I would like to learn something. Even though she made a great comment, is there a possibility that because we were only and only looking for the didar of the nur in the form of the light, then we may have missed other forms of touch, happiness, understanding, enlightenment? What about the sound? What about the smell? What about the taste? What about the touch? And what about different kind of vision? May it be in the form of a spark, or sometime you feel there is a light have gone on in Jamaat Khana. You open your eyes, there is no light because it was not outside, it was inside. Or you feel a spark, or you feel someone touching you.
Someone is very close to you and his hand is on your head, on your cheek, or on your shoulder. How about all of those and you open your eyes and there's nothing there? Because Imam's Nur is called Nur Fahal. And Imam's Nur can take different manifestation forms. It may comes in the form of a smell or taste or sound or which vision. And even in vision there are different vision. In the sound there are different sounds. And the two example I gave was the sound of a buzzing sound or sound of a small child speaking within yourself. Do not miss any of those because Imam wants to open your batini ears. He wanted to open your batini senses. He wanted to open your batini eyes. So he may come to you in different shapes and form, inshallah. Ji. Sir, we have a question. You may have answered it already, but I will ask if you say 5 sense of receiving light, what about sixth sense? Is it already the stage of enlightenment? Right. So, of course, you have to have all of the experiences before you can get to the sixth. Sixth, or the, I would want to say, the complete Ruhaniyat. Complete Ruhaniyat cannot just come in the one go, but is a collection of many experiences. Complete Ruhaniyat is a collection of many experiences. I hope you understand what I'm trying to say, tell you. G. Right. So can you elaborate when the Noor touches us? How does it impact us in our daily lives? For example, Noor in heart or eyes. Regardless of how that nur touches you, it does change your daily life because now you have something which 8 other billion people don't have. You have been touched by the nur, the light, and the understanding. You will, hopefully, your attitude will change. You will be more humble. You will be more calm. You will be more serious in your life. As you will be focused more and more toward your spiritual life, paying more attention to your soul, of course, your daily life will be impacted by that, meaning you will be paying less and less importance. You still be paying attention to your physical life, but the importance will be less as you will understand that physical life is temporary, so you will give less importance to that, meaning your attribution, your habits, the way you talk and walk will change slowly. It's not going to happen suddenly. Slowly it will change. G. Yes, another question. Mala has mercifully reassured us that there is no failure in Bandagi. So, just for my understanding, is it okay for us to go back to Mala and acknowledge that the bowl he has given has not worked for us? You could do that. You could do that definitely. But there is no way the ball would not work for you. There is no way. Because just by saying the ball has not worked for me, another word you are saying, I have failed. Or worse, the ball has failed me. You see that? When you say the ball has not worked, another word you are saying, I have failed. Or the worse you are saying,
that ball has failed me. I would like to, normally I don't like to give stories, but in one event, Imam Aka Sultan Muhammad Shah Salatullah Alayhi, may my soul be sacrificed to that Imam, had a conversation in the old days when Imam would come for Jamaati work. Imam will interact with the Jamaat. One of the murid came forward and told Mullah, Ya Mullah, my ball is not working for me. And Mullah said, are you doing everything which you are supposed to be doing? And he said, yes, Mullah, I'm doing everything I'm supposed to be doing. Mullah asked second question, are you punctual in your rites and rituals? He said, yes, Mullah, I am punctual in my rites and ritual. Mullah said, are you giving your dasan correctly? He said, yes, Mullah, not only I'm giving my dasan correctly, I'm giving more dasan than it is due on me. Before I tell you what Mullah answered, what was wrong with all these answers? Think about it. What was wrong with this answer that he was giving to Mullah Bapa? What was missing? हमें नहीं पता है कि दर्शन हमारी परफेक्ट जा रही है. बताए क्या मिस हो रहा था? You know what was missing? Humility was missing. आजीजी नहीं थी वहां पर. आजीजी नहीं थी. अगर उसके जगह हम होते तो क्या बोलते हैं? मौला मैं तो बहुत गुनहगार हूं, मैं कोशिश करता हूं. फिर जब मौला पूछते हैं कि क्या तुम अपनी दुआ इबादत पूरी करते हो? मैं कहता, या मौला कोशिश करता हूं, बहुत गुनहगार हूं, गलतियां हो जाती है. क्या तुम दसम पूरी डालते हो? मौला कोशिश करता हूं, बहुत गलतियां हो जाती है, माफ कर दो मौला. See, humility was missing. Now let me tell you what Imam answered. Imam ने क्या फरमाया इसके बाद? If you are telling me you are perfect in all of this, then either you are lying or I am lying. या तो तुम झूठ बोल रहे हो या मैं झूठ बोल रहा हूं. Because I'm telling you the Isme Azam I have given you is the perfect Isme Azam. There is no way the Isme Azam will not work for you. There is no way. Mullah say either you are lying or I'm lying. What example or what lesson we can learn from this example is, if you feel that if Isme Azam has not worked for you, how would you go there? You will go there with a humility. You will not say that this Isme Azam you have given not work for me, but you will say, Mola Bapa, I am not able to successfully finish my Isme Azam. So please have mercy on me. Would you please give me another Isme Azam? And Imam will happily will give you another Isme Azam. And then when Mola Baba comes back, and if you go back again, Mola Baba give you another Isme Azam. There is no limit. You can go 1 time, 2 time, 3 time, 4 time, 5 time. There is no limit. Go as many time as you like. Have the blessing on yourself. You see, what we are learning is to change the way we think. We need to change the way we look at Isme Azam. And I hope today we don't have the understanding the way we had yesterday. आज मुझे उम्मीद है कि आज हम वो बातें सीखे हैं जो कल हमको पता नहीं थी. And with that understanding,
Sit in ibadat, success will be yours. Imam blessing is with you. Imam himself is with you. And Imam's hand is on your shoulder. Remember, Imam's Noor is so close to you that we can say is almost, not almost, definitely, not definitely, perfectly is sitting in you. Just have to do is open it. Just open it. Look at the word Imam using. Search for that Noor. Where would you search for that Noor? Imam has already given to you, is inside of you. Just search for it and find it. G. Great question. Thank you for asking, by the way. Okay, so there's another question. How can one know that he or she not imagining something then one is touched by Noor? Well, when you open your eyes, you will know there is no one there, and you have been feeling, because this touch, what did Imam says? When this will happen, there will be no doubt. You see that? There will be no doubt. Keep your heart and mind open. It will touch you and you will know it. Yes, inshallah. G. Uh, I think Shamim Saba, Shamim Kaku, please go ahead. याली मदद सर Yeah. सर यहाँ पे हम इल्मी और अक्लानी नूर और दीदार की भी बात कर सकते हैं बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि नूर जो है वो यहाँ से भी आता है, राइट, समझ की सूरत में भी आता है, और इस दीदार के अंदर कभी कभार हमें इल्म भी दिया जाता है और हिदायत भी दी जाती है। यानी कि एक इल्म होता है सिर्फ प्योर, जो बहुत बाद में जाके हमें समझ में आता है कि ये क्या था, लेकिन कभी कभार इल्म के साथ हिदायत होती है जो फौरन से समझ में आ जाता है, क्योंकि इल्म और हिदायत साथ में होती है। चूंकि इमाम का नूर हर तरह से हमको छूता है, तो इल्म तो सबसे ऊपर होगा फिर, क्योंकि जी सर इल्म के जरिए से ही, समझ के जरिए से ही इमाम हमको आगे ले जाता है। एब्सोल्युटली, यस। थैंक यू जी। Ji, this time I think it's a Shamim Kaku. Ji, Shamim Kaku, please unmute your device. जी आई ऑलरेडी डन थैंक यू I think we have the question in the chat, sir. But Mola is not coming so often. After so many years, he gave ball in Diamond Jubilee. So I think she's asking about the question, like 2 questions before. Right. So you are absolutely right. This Nachis and Garib have made my like lifetime goal, aim, purpose to tell anybody and everybody who's listening, as far as my voice can go in the Jamaat, do not miss any opportunity ever. If Mola comes every year, go. Go take the blessing. Receive the blessing. If Imam comes every 5 years, go. Do not miss any chance. If you are saying that you have missed the chance, no worries. No worries. You already have Isme Azam. You already have a bowl. Continue on that. And Imam's blessing is with you. And next time, inshallah, soon, when Mola Baba will come, you can go again. Do not miss a single opportunity to receive the blessing of the Imam. It is all about his dua, ashish, and blessing. It's all about that. So do not miss. As far as my voice is going, if you can hear me,
Do not miss the opportunity, a chance to go whenever and as many times as possible when Imam comes and gives Isme Azam. Ji. Yes, there are no questions in the chat. Okay, any last comment or last question before we end this session today? याली मदद सर, Ya Ali Madad. आपके लेक्चर एक्सलेंट है। मैं एक Shukran, alhamdulillah. छोटा सा इंसिडेंट जो मेरी माँ के साथ हुआ था, तो वो मैं बता सकती हूँ। बंगी के बारे में ही है, खाली उसने मेहमानी में पूछा था। जी बता सकते? बिल्कुल। शी वॉज वेरी यंग, शी वॉज ओनली 16 और 18 years of age। हम छोटे थे तो हमको वो सुनाती थी कि मैं मौला बापा को बोली, मेहमानी पे था ना, पहले सब साथ फैमिली होती थी, तो मैं मौला को पूछी, मौला मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ, पर मुझे तो नजर नहीं आता है इबादत में, मैं कोशिश करती हूँ। उसने बोल पहले से ले लिया था छोटी उम्र से। तो सुल्तान उमर शाह खुदावंद जवाब देते हैं कि देखो बेटा, ये बनाना की प्लेट है, मेहमानी में तुम लेकर आए हो, ये एप्पल की प्लेट है। अगर तुम बनाना का सोचती रहोगी तो तुम्हें बनाना दिखेगा, अगर एप्पल का सोचती रहोगी तो एप्पल नजर आएगा, अगर मेरा सारा वक्त सोचती रहोगी तो मैं तुम्हें वल्लाह नजर आ जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सो सुभान इट्स अल्लाह। जस्ट द विजुअलाइजेशन और थिंकिंग के इमाम कौन है, कितना बड़ा है, उसने पावरफुल बोल दे दिया है हम लोगों को, जिस बोल में सब पावर है। इसके तो सुभान अल्लाह। फिजिकल बेनिफिट्स इतने सारे हैं कि आई कांट टॉक अबाउट इट, देयर इज सो मच अच्छा मेरे को ये गोइंग ऑन। बताएं यास्मीन बहन, आपकी मदर मलिका कितनी हूँ, यंग मलिका थी? हूँ। मेरी माँ सिर्फ 16 की थी उस वक्त। लेकिन नहीं, उस बोल जब लिया था वो कितने साल की थी? 13 years की थी। So is there the story that we have been talking about? I have talked about a 13-year-old receiving Isme Azam from Sultan Muhammad Shah in the Sultan Muhammad Shah's Golden Jubilee. Was that your mother? We have heard about. आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन मेरी माँ भी अलवाइजा थी और उसकी माँ भी अलवाइजा थी। Right. तो Okay. शी यूज टू फातिमा नानावटी, आई डोंट नो आप जानते हो कि नहीं, तो वो जाती थी मेरी माँ को लेके सुल्तान उमर शाह के बंगले पे। तो तब उन्होंने कुछ मौला से लिया था, जो कुछ भी लिया था, बर्ड या Right. व्हाटएवर। तो So फिर जब there is 16 a साल की story. थी तो ये लोग, हाँ, तो ये लोग फैमिली की वो करते थे ना, मेहमानी। Subhanallah. तो Subhanallah. उसमें उसने बोला कि बस मेरा सोचते रहो तो मैं जरूर नजर आ जाऊंगा। Subhanallah. Subhanallah. बहुत खूब, बहुत खूब. थैंक यू, Thank you. Thank you for थैंक यू, sharing. थैंक यू। Ji. There was one other person wanted to say something. याली मदद अजीज सर। Ya Ali Madad. सर आपने लास्ट टाइम इलम सेशन में बताया था, लास्ट सैटरडे को आपने फरमान बताया था हमको हाजी इमाम का 2000 का, कि एज मेनी टाइम आई विल कम बैक, यू कम बैक। तो फरमान हमको मिल सकता है सर? बेशक. प्लीज प्लीज। Absolutely. Yes. तो Kamble जरूर। Sahab, if you share your information, he can help you. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो Hmm? मच, थैंक You're यू। welcome. Any other सर मैं comment? बोल सकती? थैंक यू जी सर, बेशक. थैंक यू सर। अभी ये जो एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल नहीं, जो वर्मा शेयर करे ना उनकी मम्मी का, कि आप बनाना सोचेंगे तो बनाना मिलेगा और एप्पल सोचेंगे तो एप्पल मिलेगा। तो यहाँ पे ये समझ सकते सर कि मतलब अपन ये सोचते रहते कि अली पापा मेरे को नहीं दिख रहे, अली पापा मेरे को नहीं मिल रहे, ऐसे ही सोचते रहते, इसलिए अपने को फिर अली पापा नहीं दिखते। तो अपन ऐसा सोचना कि अली पापा अपने को मिल रहे, अली पापा अपने को दिख रहे, तो ऐसा पॉजिटिव ही सोचेंगे तो अपने को अली पापा दिखेंगे। इसका मतलब ऐसा ले सकते सर, क्योंकि हाँ दो एक तो चीज बोली। या नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा इसको चेंज करने की जरूरत है, सिर्फ थोड़ा सा। मुल्ला क्या फरमाते हैं कि अगर आप दुनियावी तौर पर मुझे ढूंढेंगे, जिस तरह से नाचीज ने रोशनी की बात की, कि चूंकि हम जाहिरी रोशनी का सोचते हैं, इसलिए हम जाहिरी रोशनी को ही ढूंढते रह जाते हैं।
जबकि रोशनी और दीदार बहुत से अलग अलग किस्म से आता है। तो मुल्ला क्या फरमाते हैं कि आप बोल का सोचेंगे और बोल के ऊपर तवज्जो देंगे और बोल में से जो नूर है उसका सोचेंगे, तब आपको जाकर बोल ही से वो नूर मिलेगा। लेकिन अगर आप जाहिरी चीजें सोचते रहेंगे, जैसा कि नाचीज ने लाइट की एग्जांपल दी, तो वो जाहिरी लाइट नहीं होगी, क्योंकि वो जाहिरी लाइट का जो हमारा जो ख्याल है वो इतना लिमिटेड है, छोटा है, कि हम खाली जाहिरी लाइट का सोचते हैं कभी लाइट जल जाएंगी बस। तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो जाहिरी को छोड़कर, दुनियावी चीजों को छोड़कर आप आराम से बैठे, ताकि मौला आपको वो देवे जो वो देना चाहता है, वो जिस तरह से देना चाहता है। क्योंकि मौला तो अलग अलग रास्ते ढूंढता है, कभी यूं देता है आपको, कभी यूं देता है, कभी यूं देता है। तो मौला यहाँ पर ये समझा रहे थे कि अगर आप जाहिर सोचेंगे तो आपको जाहिर मिलेगा, लेकिन अगर आप बातीन का सोचेंगे तो आपको बातीन मिलेगा। आप अपने इसमें आजम पर तवज्जो दें, ताकि उस इसमें आजम में से आपको नूर भी मिले, आपको दीदार भी मिले, और आपको तमाम किस्म का दीदार मिले। क्योंकि दीदार इतनी किस्म के हैं कि जो हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इतने अलग 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 इंडिविजुअली यूनिकली दीदार होते हैं। तो जितनी भी मिसालें देंगे वो कम हो जाएंगी। फिर तो ये मौला समझा रहे हैं हमको कि जाहिर का ना सोचे आप बस। जी थैंक यू सर, शुक्र अली अल्लाह, थैंक यू। जी, यारी बहुत मदद नवाज। sir. या अली मदद डॉक्टर Uh, साहब। I यस, think I just wanted to add one line of Imam's Farman when Imam says that when you are sitting in Bandagi, what are you doing or what are you seeking? You are trying to come closer and closer and closer to He who is above all else. So you're trying to come closer to the Nur अली अल्लाह और अल्लाह who is all above else. और इस तरह उसके अंदर जो है ना अल्लाह, no physical things, no physical attributes, so you are trying to come something which is unknown, but then as we discuss, Imam says that when you get touched you will know it, and we have to be sure belief in that. सुभान अल्लाह, Thank you. सुभान अल्लाह, एब्सोल्युटली, थैंक यू सर। जी Ji Leila, please go ahead. या अली मदद या अली मदद। वो बताते हैं, मैंने एक वाइज में सुना था कि अगर आप पूरी जमात के साथ बैठे हुए इबादत करते हैं तो कोई एक रूहानी की इबादत से सबको फायदा होता है। तो कैन यू एलिबरेट अ लिटिल बिट ऑन दैट? श्योर, एब्सोल्युटली। आपने कभी बारिश होते हुए देखी है? जी जब बारिश होती है तो वो रोड पर भी गिरती है, बिल्डिंग पर भी गिरती है, इंसान पर भी गिरती है, खेतर पर भी गिरती है, जानवर पर भी गिरती है, राइट। जी और जहां पर बारिश नहीं हो रही है ज्यादा, यानी कि थोड़ा दूर भी है, तो वहां पर भी पानी के छींटे उड़ते हैं। नाउ टेक दैट एग्जांपल, that one amongst the 100 sitting in the Jamaat Khana. That is the reason that we're supposed to go to Jamaat Khana for Ibadat. Because we are nobody, weak, right? We are या so weak that we are not able to be finish our Ismi Azam. So what do? We sit amongst those who are great and successful in Ibadat. And when the Nur will be showered on him or her, then maybe just a little bit of those spark, the blessing will be touched on your heart. In the reference of Hazrat Musa in the Quran, ओके those who are
And there are two references. Those who are in the light, in the Nur, and those who are around the light and the Nur. They are both blessed. They are both blessed. Second reference is that there are 8 angels who are carrying the throne, the Nur of Allah. Those who are around them are also blessed. You see, that is so important that we understand that especially those great Mu'mineen, Bhagas, if we are sitting with them, then their blessings, their nearness to us also will be felt by us. And that is the one great reason for us to go to Jamaat Khana for Ibadat. तो Ji. सर वो मेंबर जिस एक रूहानी की वजह से जिसको सबको भी बेनिफिट मिलता है दे विल फील द सेम एक्सपीरियंस एज द Not necessary. छींटे उड़ते हैं ना, उसके पर बारिश हो रही है, ओके उस पर बारिश हो रही है, हम पर छींटे उड़ेंगे. तो हाउ डू जी. वी आई नो दैट इट्स somebody else's बंदगी is We helping don't us? need to know that, right? Because we don't know which one of those 100 sitting in Jamaat Khana is successful. We don't know that, right? So we just take it as it is that Imam is blessing us, and because we are using our humility, we are saying, Mullah Papa, I know this is not because of me. This is not because of me. It must be one of these great Mu'mineen sitting around me. That's the part of the humility. Ji, Okay, good, okay, great question. Ji, thank you, Alhamdulillah. thank you. Jilela, you raise your hand. Do you want to ask a question? You can unmute your device. I just talked to Okay. It was a different person who raised their hand. Okay. So I think we have some question in the chat. So guys, if you have Naksh and have concentrated on it as you start Ibadat, and then it disappears from vision because you are in full concentration, is that okay? That is perfectly okay. Absolutely. Because if you are into it, then you don't need anything, right? You are into it. Yes, that is absolutely okay. Okay, so you said throne of Allah. So Ayatul Kursi, is it refers to intellect? That's a complicated question, because throne of Allah or the arsh of Allah equals to Nur, and the Nur equals to anything and everything. So by default, you can say absolutely it is intellect or universal intellect, universal soul, and all of the above, right? Because that definition is so broader, we cannot just close that into the one single word or language. Because if you say it is only intellect, then again we have a short answer. If we leave it on an open, broader answer, because Nur is in everything, so we can say it's much broader answer than just one word. G. All right, sir, we have another question. This is something new for me. Can online bandagi will work if we all perform 5 minutes bandagi here and there? Sure, why not? Ali Allah is so great and so merciful. Now He can also help us virtually. He has no limit. Why not? Good question. See, people are looking for shortcut not to go to Jamaat Khana.
I love you dearly, my brother, my sister, whoever is asking. जी. So don't have any question in the chat. All right. So let's stop here, Kamle Sahab then. या यालमिंदर सर कैन आई याली मदद. मेरे को एक कंफ्यूजन है, पता नहीं मैं प्रॉपरली समझ सकती हूँ कि नहीं, पर फिर डर भी है एक. एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, मैं अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ कि ये मेरे ख्याल में आप यहाँ पर ना करें. अगर अच्छा प्राइवेटली आप करना चाहते हैं तो नाचीज को फोन कर लें. श्योर, थैंक यू. Yeah, यालमिंदर, because you don't want to share your experience. जी. थैंक यू यालमिंदर. याली मदद. You have my contact, right? You can contact me. यस सर, थैंक यू यालमिंदर. Okay. याली मदद. याली मदद. Alright. All right. So let's stop here. Inshallah, we have another session this afternoon, and we will meet again later on. Inshallah, फिर दोपहर को मिलते हैं एक और सेशन के साथ. याली मदद everyone. Thank you for joining. याली मदद. याली मदद यानी सर. मदद सर, मौला सुखी याली मदद. सलामत आबाद रखे. आमीन. आमीन.